Assalamu alaikum. In my last lecture, I gave you a brief introduction of this lesson, The Dying Sun, and from this lecture onwards, I'm going to start the explanation of the paragraphs of this lesson. This is para number 1. Here Sir James says, a few stars are known, which are hardly bigger than the earth. A few means shorter in number. Known is something we are familiar with, जिसको हम जानते हैं, जिससे हम वाकिफ़ हैं. Which are hardly bigger. Hardly means barely, scarcely, बमुश्किल. Bigger than the earth, जो कि ज़मीन से बमुश्किल बड़े हैं. ऐसे stars का number very few है, short है, कम है. But most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. But most of the stars, the majority of the stars, they are so big that hundreds and thousands of earths, means millions of earths, can be packed. Packed means placed. उनके अंदर समा सकती हैं, उनकी सरफेस के ऊपर रखी जा सकती हैं, inside each and leave room. Room means space, capacity, गुंजाइश. The word spare means extra. और अगर हमारी ज़मीन जैसी हज़ारों लाखों ज़मीनें एक स्टार की सरफेस के ऊपर रख दी जाएं तो वो इतना बड़ा है कि उसके ऊपर फिर भी जगह बच जाएगी. Here and there we find an immense star. The word immense means very big, vast, huge, enormous, बहुत बड़ा और फैला हुआ. Here and there we find an immense star. यूनिवर्स में all around हमें ऐसे बड़े बड़े stars मिल जाते हैं that are large enough to contain. Contain means to keep. उनके अंदर समा सकती हैं millions and millions of earths. So यहाँ first sentence में सर जेम्स ने हमें बताया about the size of a star और उनका ये ख्याल है कि an average star is millions and millions of times bigger than the earth. Then he talks about the total number of stars and he says, and the total number of stars in the universe is something like the total number of grains of sand. Grains of sand रेत के ज़रात को कहते हैं. Grains of sand on all the seashores. Seashores means साहिल समंदर, banks, seaside, is something like the total number of stars, grains of sand on all the seashores of the world. सारी दुनिया के साहिलों पे जितनी भी रेत है, such is the total number of stars in the universe. So Sir James ने हमें ये एक ऐसा concept दिया है जिससे हमें पता चलता है कि the number of stars in the universe is countless. और आपने ये भी पढ़ा है साथ ही कि एक स्टार ज़मीन से millions of times bigger है. Then he says, such is the littleness of our home. Our home here means the planet Earth in space. When measured up, जब हम उसकी पैमाइश करें, जब हम उसको जज करें, against the total substance. Substance here means body और mass, जो भी और heavenly bodies यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं, सारे यूनिवर्स के मैप के ऊपर इस सारे सिनेरियो में जब हम प्लैनेट अर्थ को विद रेफरेंस टू साइज देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि दिस इज़ वेरी लिटिल. Now we'll have a look at the meanings and synonyms that we have studied in this paragraph. A few, some, not many, थोड़े से या चंद एक. Hardly, barely, scarcely, बमुश्किल. Pack, put inside, enclose. समो जाना, पूरा आ जाना. Room means space or area, जगह, गुंजाइश. Spare, left, extra, फालतू. Immense means big, huge, vast, बहुत वसी, बड़ा, फैला हुआ. Enough, sufficient, adequate, काफ़ी, बहुत हो जाना. Contain, hold or keep, समा जाना, पूरा आ जाना. Grains, particles, specks, ज़रात. Measure, कैलकुलेट, कंप्यूट, असेस, जायज़ा लेना या पैमाइश करना. सब्सटेंस, मैस और बॉडी. Now here once again we'll recap and we will see what were the important points that have been discussed by Sir James in the first paragraph. Now first he told us about the size of an average star. उन्होंने हमें ये बताया कि an average star is millions and millions of times bigger than the earth. Then he talks about the total number of stars और उनका यह ख्याल है कि total number of stars in the universe is countless. And in the end of the para, he talked about the littleness of the planet Earth. Well, students, let's move to the second paragraph now. In the second paragraph, again, the topic of discussion is the stars. Here Sir James says,
These millions of stars are wandering about in space. Wandering means moving freely. अब आपने ये पढ़ लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टार्स काउंटलेस है और एक स्टार ज़मीन से मिलियंस ऑफ टाइम्स बड़ा है, बट दैट डज नॉट मीन दे आर नॉट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, वो फिक्स्ड नहीं है. ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट स्टार्स आर मूविंग around their orbits freely, and here Sir James says these millions of stars are wandering about in space, meaning उनकी जो movement है वो free होती है. And then he says if you form groups which journey in company, कुछ stars ऐसे होते हैं जो एक group बना के इकट्ठे मिल के सफ़र करते हैं, but most of them travel alone. लेकिन ज़्यादातर स्टार्स अकेले ही अपने ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं. एंड दे ट्रेवल थ्रू ए यूनिवर्स सो इमेंस, और वो इतनी बड़ी यूनिवर्स के अंदर सफ़र करते हैं दैट इट इज़ ए वेरी वेरी रेयर इवेंट इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर. नाउ स्टूडेंट्स, इन फैक्ट दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस पैराग्राफ, और इसी पे बेस्ड अगले पैराग्राफ में सर जेम्स अपनी एक थ्योरी को भी स्टार्ट करेंगे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट क्लियरली. यहाँ सर जेम्स बात कर रहे हैं एक रेयर इवेंट की. रेयर का मतलब है अनकॉमन, एक्सेप्शनल, बहुत कम पेश आने वाला वाक़या. इवेंट यहाँ उन्होंने कहा है, इसलिए हम रेयर इवेंट को बहुत कम पेश आने वाला वाक़या ट्रांसलेट करेंगे. इंडीड फॉर वन स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर. सो सर जेम्स का ये ख्याल है कि यूनिवर्स के अंदर एक स्टार के दूसरे के करीब आ जाने का वाक़या बहुत ज़्यादा रेयर या अनकॉमन है. ऐसा बहुत कम होता है कि एक स्टार दूसरे के करीब आ जाए. For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness. Voyage travel through sea or air है. In complete loneliness means being alone, single, like a ship on an empty ocean. यहाँ पे सर जेम्स ने अगेन एक एग्जाम्पल चूज़ की है. empty ocean, खाली समंदर को कहते हैं. वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि एक स्टार का दूसरे स्टार से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. एंड हियर ही सेज इन स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स. अगर आप एक मॉडल बना लें इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स के कॉन्सेप्ट को, तो इन स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर 1,000,000 माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर. एक शिप दूसरे शिप से मिलियंस ऑफ माइल्स के डिस्टेंस के ऊपर होगा. फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, और इसी से हम ये बात समझ सकते हैं वाई ए स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार एनीवेयर नियर इट, बिकॉज उनके दरमियान डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है दैट दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. दिस वर्ड सेल्डम इज ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेयर, और इसका भी मतलब अनकॉमन या एक्सेप्शनल है. Let's look at the meanings and synonyms of the difficult words in paragraph number 2. Wandering, go astray, move aimlessly, आज़ादी से घूमना फिरना. Rare, seldom, unusual, infrequent, नायाब. Event, incident, happening, occurrence, वाक़या. Voyage, journey through sea or sail, बहरी सफ़र. Loneliness, solitude, aloneness, अकेलापन. Now we will recall the important points of paragraph number 2. Paragraph number 2 में Sir James talked about the movement of the stars, और उन्होंने ये बताया that stars travel in complete loneliness. Stars अकेले सफ़र करते हैं mostly. Each star is well over 1,000,000 miles away from its nearest neighbor, और इसी वजह से सर जेम्स ने इस वाक़े को रेयर कहा है कि एक स्टार दूसरे के करीब आ जाए, because there is a millions of miles of distance between the stars. And then he says that a star is like a ship in an empty ocean, कि एक स्टार ऐसे ही है जैसे खाली समंदर में सिर्फ एक जहाज़ सफ़र कर रहा हो, और इसीलिए उन्होंने इस वाक़े को रेयर कहा है कि कोई स्टार दूसरे के करीब नहीं आता. Well, that's all for today's lecture, and from next lecture I will start with the third paragraph onwards. Till then, Allah Hafiz. Thank you.